हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का मेरे लाइव स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ फेल, विच इज रिटन एंड डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विदो विनोद चोपड़ा, विच स्टार्स विक्रांत मासे and Medha Shankar, Sanjay Bishnoi, Anshuman Pushkar, and some others as well. So let's start with first of all, please do subscribe to my channel. ऐसे वीडियोस आने के लिए, ऐसे डिस्कशंस पॉसिबल होने के लिए और ऐसे लोगों को इनवाइट लाइक ऐसे कर सकूं मैं, सो उसके लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डॉक्टर टू, मतलब कभी भी कुछ हिंदी फिल्म तो ऑब्वियसली डॉक्टर को ही इनवाइट जैसे करना होता है। एंड ही आस्क्ड मी, लाइक ही इंसिस्टेड कि ये फिल्म के लिए वो आए क्योंकि ही हैज क्वाइट इनसाइट्स अबाउट द एक्चुअल पर्सन एज वेल. सो yes, and Amartya making his rare appearance for a Hindi film, but इसलिए रेयर अपीयरेंस क्या? yes, वो यूजुअली ऐसे क्या बोलते हैं, हिंदी फिल्म्स के लिए नहीं, वर्ल्ड सिनेमा और हॉलीवुड के लिए आते हैं. सो यस, ये रेयर अपीयरेंस में बोल सकता हूँ. इसलिए वाह वाह वाह. सो यस, लेट्स बिगिन. डॉक्टर, कैसा लगा था आपको ये फिल्म? कभी सुनने में आया था? लाइक मैं जैसे कि बोल सकता हूँ, ये बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023 फॉर बॉलीवुड था. तो आपको ये कब सुनने में आया था और हाउ डिड यू फील व्हाइल वाचिंग दिस फिल्म? Well, सुनने में तो मुझे first of all, good evening everyone. Thanks Sanket for having me back and for discussing this movie. And hi Amartya, really nice of you to join us on this discussion. And सुनने में तो मुझे ये फिल्म ऐसे ही आया था जैसे कि every other trailer drops these days, and I just watch it whenever I can. I'm a sucker for trailers. So yeah, I watched the trailer and अच्छा तो लग रहा था. It looked promising and it came from विदु विनोद चोपड़ा. उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा हिट एंड मिस सा रहा है. So I found the trailer impressive, but I was like, let's see, let's wait for the reviews, let's see for the how the reactions are. So how I happened to watch this movie is very interesting actually. I watched this movie released right at the middle of Jio Mami Mumbai Film Festival, मिडिल which both नहीं, yeah, मिडिल नहीं, उसी दिन में रिलीज हुई थी. लाइक 27 को मामी शुरू exactly हुआ yeah, और 27 को ये just फिल्म Mami. रिलीज हुई. Yeah, just Mami जैसे शुरू हुआ तब आई थी ये फिल्म. And both Sanket and me attended that festival. Sanket attended more extensively. I was like, I just caught whatever I could whenever I got the time. So that was how it was. बर्थडे लोग सब, बर्थडे लोग सब. हम लोग तो छोटे शहर के आदमी है, क्या कर सकते हैं. अरे आप भी अपना शेयर ऑफ सिनेमा काफी देखते हो, एनालाइज करते हो आरतिया. ओके. नहीं नहीं नहीं, लोकेशन मैटर करता है. लोकेशन तो हमारा क्या ही बोले. और लोकेशन का अगर बात करना शुरू कर दे, पूरा पूरा पॉडकास्ट टाइम ओके. कवर हो जाएगा. या श्योर. बट ठीक है, लोकेशन से ज्यादा तो जज्बा होता है जो आप में भर भर के है अमर्त्य, जो चाहे रियली सी इन वॉट एवर एक्टिविटी यू डू. सो एनीवे, कमिंग बैक टू द थिंग, सो आई वॉच्ड इट. मामी के बीचों बीच ये फिल्म आई थी एंड इट वाज क्वाइट अ chaotic time for all of us cinephils here. एक तरफ मुंबई में मामी चल रहा है, दूसरे तरफ बॉलीवुड ड्रॉप्स 12th फेल एंड इट इज गेटिंग सच रेव रिव्यूज. एंड उसी तरफ हॉलीवुड ड्रॉप्स किलर्स ऑफ द फ्लावर मून बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी. एंड वी आर लाइक, देखे तो क्या देखे. सडनली इट्स लाइक हमेशा अकाल पड़ा रहता है एंड सडनली देयर इज दिस इतना बड़ा बुफे लग गया कि, और हमारे पास एपेटाइट ही नहीं है जितना खाने को, उतना बड़ा सडनली बुफे लग गया फॉर द ग्रेट डिशेस. ऐसा हो गया था. सो दैट्स हाउ इट वाज. एंड देयर वाज वन डे वेयर मामी का चल रहा था एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू, आई हैड द फ्री टाइम rather to watch a particular movie, but I didn't because I was kind of not feeling well and I was at home, so I didn't feel like queuing up and going there, and so I skipped it. And then by night I was feeling slightly better, and I felt I should really watch something, to make up for it. And then I ended up watching 12th Fail. And I remember it was in one of those theaters which was already one of the centers for Mami. And मेरे बाजू में people were queuing up for Old Boy, and मैं इधर 12th Fail देखने को जा रहा हूँ. ऐसा था. So I went and I watched 12th Fail, and by interval मैंने
I was like, okay, this is one of the great movies of this year. Vidhu Vinod Chopra is back, and how? And by interval, I was convinced that I'm watching one of the best movies of the year. That's it. So that's how it was, and I really liked the way it unfolded. And then I watched the whole movie, and I was like awestruck, and I was like one of those experiences where I just wanted to go out and tell everyone, please watch this movie, please support this movie. It is a movie which requires all your love, because even though it comes from a reputed producer director, but unka thoda track record वैसा रहा है, and also this movie doesn't have any big stars to support it. So because of all that, I was like, will this movie get its audience? Will it get the attention? And all the cinephiles in Mumbai were like all busy with Mami and Killers of Flower Moon, and when all this ये इस इतनी अच्छी फिल्म को इसका ड्यू अटेंशन मिलेगा, so I was like going everywhere and saying ये फिल्म देखो ऐसा था. And I absolutely loved this movie. ये फिल्म के बारे में बोलूं तो क्या बोलूं? Okay, it's a rags to riches movie. It is a coming of age drama. Now this genre में, while this genre has its advantages, it can always add an element of freshness and fresh discovery of the world as seen through young adults, वो एक रहता है, but at the same time इस genre के trappings भी रहते हैं. Any drama which is of this genre can go into those typical tropes, typical glitches, and just become one more attempt at portraying something. But this movie did not go into any of that. I particularly liked a lot of sequences, the way they built up the protagonist from a kind of side character to a main character, that was so good. And all the people, all the secondary characters, they're like real people, and loved it like anything. So I was recommending it full on, and I still want to I want people to talk about this movie and to really highlight it up. This really deserves much more discussion, much more emphasis, attention. So yeah, that's how my whole experience was with this movie. That's Yeah. good. That's great, doctor. So next up, Amartya, कैसी लगी ये फिल्म? कब कब सुनने मिली थी? What are your thoughts? कैसी कैसी थी? So I don't usually watch trailers of these movies. Okay, first of all, is my audio okay? That's what I'm asking. Number one, audio ठीक है? हाँ Yeah, हाँ we हाँ, can do audio it बराबर. well. Yeah, okay. So first of all, ये ट्रेलर मैंने देखा नहीं था, ठीक है? So I had no idea what was shown in the trailer, क्या हो रहा है, no idea. हिंदी मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी स्पॉटी रहा है इस साल. आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू व्हाट केम आउट इन दिसंबर एंड व्हाट नॉट, वो सब में नहीं जा रहा हूँ मैं. सो द थिंग दैट अब क्या हुआ कि आई वाज आल्सो हियरिंग ऑल दोस रेव रिव्यूज व्हिच यू वर हियरिंग. सो आई वाज surprised for a minute. Then I saw that Vikrant Massey is leading this movie, and my first thought was, well, good for him. He's actually, leading the pack and actually having a movie released in theaters, which is now earning money and also getting rave reviews. That is good for him. Then I see that this movie is overtaking Tiger 3's box office, and I'm like, okay then. Okay then. Number one, that means Tiger 3 is abysmal, which it is. It's abysmal. Number two, this movie is actually being seen by people, which is very good because it needs to be seen by people. So after realizing that, I'm like, चलो देख के आता हूँ कि क्या बना है. When I finally entered and when I finally sit down, I had just two thoughts. Number one, टीवीएफ ने इस मार्केट को ऑलरेडी कवर कर रख चुका है, ठीक है? ये एजुकेशन जॉनरा को इसको कवर कर दिया है, इसको कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया है. अब नया सीए का एंट्रेंस का शो भी बना देंगे ये लोग, कोई इशू नहीं है, वो बना देंगे कोई ना कोई, ठीक है? सो ये कॉटेज इंडस्ट्री है और लोग देखेंगे भी, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन चाहिए. लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, लोगों को मोटिवेशन चाहिए. टीवीएफ भरपूर बेच रहा है. सो ये सिनिसिज्म था मेरे में कि मैं बैठूंगा देखूंगा ये सब हो रहा है. When I started watching it and I immediately see the first shot, how VVC is handling the camera and all of that, I was like, oh, this is different. This is very different. And by the interval point, I was completely sold. I'm like, I'm watching something very different. This is not something very much expected or something. हाँ हाँ, टाइगर 3 का नेगेटिविटी जरूरत है.
टाइगर थ्री का नेगेटिविटी बहुत ज़रूरत है. So the thing about it is, what struck me was that ये जॉनरा तो बहुत यूज़ हो चुका है. मतलब ऐसा ही रोड है, ऐसा ही जॉनरा है कि इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स. बुक्स लिखे जाएँगे, स्टोरीज़ कही जाएँगी, रेडियो स्टोरीज़ बोले जाएँगे, मम्मी-पापा सब एडवाइस देते रहेंगे कि पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, ये सब करो, वो सब करो. ठीक है? थ्री इडियट्स ने तो फ़िल्म ही बना दिया, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस दौड़ के आएगी, ऑल दैट जो भी हो. सो बट there are very few movies which actually captures the reality, the reality of preparation, and how even when you are working hard, even when you are so determined, कुछ एग्जाम्स के लिए ना प्रिपरेशन डिफरेंट होता है, you know and that learning process, you get stumble, you fall, even though you know you deserve it, you fall, and then you'll have to pick yourself back up, and then you'll have to prepare again, and मतलब ये दिस मूवी परफेक्ट है क्योंकि इसमें एक परफॉर्मेंस है जो लाजवाब है और डायरेक्शन भी लाजवाब है. सो वो दैट मिक्सिंग हैपेंड सो वेल कि ये मूवी द प्रोडक्ट विच एक्चुअली कम्स आउट इज ग्रेट. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ अ हिंदी मूवी फ्रॉम अ थिएटर, आई वाज लाइक सैटिस्फाइड. इट्स नॉट एज इफ अच्छा ये अच्छा लगा, ये क्रिंजी है, ये बुरा लगा, ये क्रिंजी है, अच्छा ठीक है. नो, नन ऑफ दैट. व्हेन आई वॉकड आउट आई वाज लाइक, आई नीड टू राइट समथिंग अबाउट इट. So this was my experience. I watched it alone because obviously, but yeah. स्टोरी पॉडकास्ट के ज़माने में अमर्त्य सर रेडियो स्टोरीज की बात कर रहे हैं. एज इशू. हाँ, बुरा पे पहुंच गए सर, क्या कर सकते हैं. और भी थोड़े कमेंट्स आ रहे हैं वैसे सर. डॉक्टर रिमाइंड्स बिस्वदीप ऑफ अ सर्टन विजय सिंह फ्रॉम अ मूवी नॉट रिलीज सो लॉन्ग, नॉट स्पोकन अबाउट अ लॉट. आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा तो नहीं हूँ वैसे जसवदीप. कहीं ना कहीं तो वैसे मेंशन कर दिया था अमर्त्य ने वैसे. वो तो स्पोकन है ही काफी वैसे तो. हाँ, वो मूवी चाहते हुए भी रिमाइंड नहीं कर सकते, फिर भी रिमाइंडेड हो ही जाता है. क्या ही कर सकते हैं. वाह. सो ये फ़िल्म एक्चुअली मामी के वक़्त मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था. और सच बताऊँ यार एक यहाँ पे कमेंट आया था ध्रुव से कि 12th फ़िल्म में भी मामी का मेंशन रहेगा. ओनली नेगेटिव एसोसिएशन विद द मूवी. नहीं यार, ये सच में ये मामी के वक़्त आया था. लोगों ने डॉक्टर ने सच बात बोला कि लोग बँट गए थे कि कौन-सा देखना चाहिए. ऑब्वियसली मामी है और जो रेयर वर्ल्ड सिनेमा फ़िल्म्स होते हैं वो अटेंड करने का कि ये देखने का वैसे. सो लोग लाइक थे. सो मैं खुद भी तभी मुझे नहीं पता था और आगे-आगे जाके जैसे अमर्त्य ने बोला था कि टाइगर ज़िंदा है. वो फ़िल्म आई थी तो तभी लोगों ने बात किया था कि ये इतनी टाइगर चली. 3. टाइगर थी, आई एम सो सॉरी. नहीं, टाइगर 3 आई करेक्शन थी. की ज़रूरत नहीं है, गलत कह दिया तो भी सही है, कोई बात नहीं है. मूवी को करेक्शन की ज़रूरत है. बराबर है. सो मैं वो फ़िल्म देखी थी लेकिन सो फिर जाके मतलब वो मैंने इग्नोर करके फिर मतलब टाइगर 3 मैं नहीं देखने वाला था लेकिन ऑब्वियसली अ, उसने इतनी इतनी अच्छी नहीं थी और उसी के बावजूद मुझे एनकरेजमेंट मिला कि इसके और थोड़े शोज़ बढ़ रहे हैं. मैं बोला चलो देखने जाते हैं और फिर जाके मैं फाइनली जाके गया. 1 महीने एग्ज़ैक्टली 1 महीने बाद गया. 27 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी इंडिया में वर्ल्ड वाइड. 27 नवंबर को मैंने देखी ये फ़िल्म. फिर जाके मैंने लाइक इतने इतने महीनों 1 महीने बाद देखी और फर्स्ट रिएक्शन मेरा वही रहा था यार कि क्या हो रहा है? यार मतलब वो जैसे अमर्त्य ने परफेक्टली बोला था कि टीवीएफ ने वो मार्केट को कैप्चर कर दिया है और उसी के लाइक उसके बावजूद भी ये फ़िल्म इतना इमोशन से भरपूर था और इतना इमोशनली मोटिवेटिंग जैसा बोल सकते हैं क्योंकि it's also about a guy who has been failing multiple times, not just कि एक ही बार में सब हो रहा है, उसको ये भी मिल रहा है, उसको वो भी मिल रहा है. मल्टीपल टाइम्स बंदा फेल हो रहा है और मतलब उस पे यार तरस आ जाती है वैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे कि वो एक चक्की लाइक चक्की में काम कर रहा है वहाँ पे और फिर जाके वो पढ़ाई भी कर रहा है और
माइंड यू कि वो एक मतलब मुस्कुराते चेहरे के साथ वो सब कर रहा है। सो वो चीज़ लाइक बहुत ही लाइक ऐसे बॉडी टफ रहती है देखने के लिए वैसे। सो मैंने ये महसूस किया था। लेकिन एट द एंड तक जब भी अमर्त्य ने भी बराबर अभी बोला था कि एक सैटिस्फाइंग चीज़ लगी थी। मुझे तो सैटिस्फाइंग से तो और भी ज़्यादा फीलिंग्स महसूस हुई थी जब भी ये फ़िल्म के बाहर लाइक फ़िल्म देखने के बाहर मैं गया था तभी। इट्स एन अमेजिंग फ़िल्म कि ऐसी मैंने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था विधु विनोद चोपड़ा ऐसी कोई फ़िल्म बनाएँगे, क्योंकि उनकी प्रीवियस फ़िल्म बहुत लोगों ने नहीं देखी थी। उसमें भी 2 न्यूकमर्स थे। मैं देखी थी, मैं एक्साइटेड था देखने के लिए शिकारा, जो 2020 में फ़रवरी 2020 में आई थी, और काफ़ी वो वही खुद बोल रहे थे कि वो काफ़ी पर्सनल फ़िल्म है, ये है, वो है, वो खुद कश्मीर से आते हैं उसके लिए। मैंने वो देखी थी और वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी थी मैंने जब भी अमेज़न प्राइम पे आई थी। So, to a follow-up to that movie, a very huge step I would say वैसे, क्योंकि उसमें लाइक इतने अच्छे एलिमेंट्स नहीं लगे थे। आई वुड फील लाइक राइट फ्रॉम द सॉन्ग्स लाइक मुझे नहीं, लेकिन इस फ़िल्म में सॉन्ग भी एक लाइक ऐसा लगा कि अच्छा एक अच्छा रीस्टार्ट मिल रहा है वो उसके करियर को, और एक फ़िल्म को भी एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है आई वुड से। और पूरे-पूरे थिएटर में मतलब मैं थोड़े लोग को देख रहा था लाइक अ, एक-एक सीन्स में वहाँ पे लोग रो रहे थे, लाइक इतने इमोशन हो रहे थे, और ऑब्वियसली क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतनी इमोशन से भर के ऐसे फ़िल्म्स हैं। सो वैसे सो आई दिस इज़ माय थॉट्स अबाउट दिस फ़िल्म वैसे, मैं बोलने जाए तो वैसे। सो नेक्स्ट कमिंग बैक टू रणधीर डॉक्टर, और क्या-क्या अच्छी लगी चीज़ें, लाइक व्हाट अबाउट द एक्टिंग, लाइक यू जस्ट मेंशन्ड कि यार बहुत मतलब लेसर नोन बोल सकते हैं, लाइक इतने बड़े-बड़े फ़िल्म्स में और वो भी लीड में जैसे कभी आए नहीं है विक्रांत मासे, लेकिन व्हाट अबाउट हिज़ एक्टिंग? व्हाट यू लाइक्ड अबाउट हिज़ रोल? Well, Vikrant just owned it up. He proved to be the perfect actor for the role. I mean, he had everything in the right from in the beginning when he was this ordinary boy from a village in Chambal. वहाँ पे उन्हें जैसे होना था वैसे वो भी एकदम प्रॉपर लगे, वैसे एक्सेंट भी उन्होंने पकड़ा, मैनरिज़म्स भी उन्होंने वहाँ पे वैसे पकड़ा। फिर उसके बाद ऑल हिज़ कैरेक्टर ट्रांज़िशंस, जैसे जब उनसे उनको उनका फर्स्ट लॉस मिलता है, जब उनका जो ग्रैंडमा के का पेंशन वो खो देते हैं, उसके बाद जो लॉस उनको लगता है, द वे ही पोर्ट्रेड दैट, this young guy who young adult who's come into the world and seen his first colossal disappointment and how he gets up from there वहां से, and फिर उसके बाद he just hears about Manoj the character, he just hears about a course for the first time, and he wants to pursue it, and वो DSP के लिए जो entrance था उसमें आई थिंक इट वाज वो एग्जाम के लिए वो नहीं दे पाते हैं, देन ही जस्ट हियर्स अबाउट IAS IPS एंड ही वांट्स टू गिव UPSC एग्जाम्स जस्ट लाइक दैट। तो वो जिस तरह से उन्होंने वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, इट वाज अमेजिंग, एंड lot of instances, some of the big moments, some of the small moments, he just proved to be the ideal candidate for the role. That's all. And he was good. And even that Medha Shankar जो जिन्होंने श्रद्धा का रोल किया, वो भी बहुत करेक्ट और बहुत aptly cast थी, and she is his big moral support. This movie, one of the good things in this movie is all the female characters are given a lot of importance. Like they're just not cardboard characters, whether it's his mother, whether it's his grandma, they are the people, or whether it is Shraddha, they are all there. They're giving him the support, and Shraddha was good. So were all the other characters. So the guy who played Gauri Bhaiya, I don't know his name. I cannot recollect his name. I think Ayushman अंशुमन पुष्कर। Anshuman Pushkar, I'm so sorry. Anshuman Pushkar, the way he portrayed it, and that भेड़ बकरी वाला जो dialogue बोलते हैं, in which he talks about his aspirations and so many other people who come from this thing very lower very lower class
strata to pursue big degrees, and उन सब का जो aspiration, उन सब का जो जज्बा है, उसे जिस तरह से वो लाते हैं उस रोल में, he was brilliant. Even that other actor जिनका मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, अनंत, जिन्होंने वो जिन्होंने प्रीतम पांडे का रोल किया, एंड द वे ही इज नरेटर पोर्ट्रेड, नरेटर या the way he's portrayed all the bittersweet notes. Like, I like that character from the beginning. He has taken pity on Manoj and brought him along with him, and he always sees him through this gaze, that he's a charity child whom I brought with me. Although he treats him as his friend, and he's not deceiving him very consciously, even in his bitter moments, he's doing it out of his own inner frustration, but he looks at him as a charity child. And so वो जिस तरह से उन्होंने वो दिखाया, that was also very aptly done. There is this guy who plays this character called Deep Mohan, who's the English medium में पढ़ा हुआ character who's pursued IAS very, who's cracked IAS, जिसके पास मनोज फिर बाद में guidance के लिए जाते हैं. He's there for a small bit. He was also good. And then of course Priyanshu Chatterjee, who, in his cameo, he is the inspirer who gets Manoj to pursue this thing and leave behind his backward ways and pursue this impossible dream. जिस तरह से वो भी लगे in his small role, he was brilliant. I mean, everyone was so superb. And regarding Vidhu Vinod Chopra, I'll say this, ये थोड़ा bold चीज है कहने को, but since Parinda, this is the best, 12th Fail is the best movie to come from Vidhu Vinod Chopra, the director. I'll say this, yeah. Wow. आपको कैसा लगा था अमर्त्य about the character Manoj and the actor who played Manoj, Vikrant Masse, and the other actors as well? There was a Bharadwaj Angan ka interview with Vikrant Masse when the movie was coming out. उसमें he was asking Vikrant Masse about his process while जब वो filming करते हैं and all that stuff. So उसका कहना है कि what the character is given to him, he tries to make that character, he tries to mold himself to that character. The character is everything to him. He's not going to own the screen, or he's not going to be some larger than life guy. He's not built that way. Even when he's a lead, he's not built that way. It all depends on the story, it all depends on the director. मुझे तो लगता है कि ये बात तो एकदम सही है इस फिल्म के लिए एटलीस्ट. एंड आई थिंक विधु विनोद चोपड़ा टेक्स हिज कैरेक्टर एज द ऑडियंस सरोगेट. इसीलिए वो कैमरा जो है वो कैमरा भी हैंडल्ड है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू एकदम वैसा ही है. पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग कि नैरेटर जो है वो एक सेकंड वॉइस है. वो आनंद का वो जो आनंद का जो कैरेक्टर है, प्रीतम पांडे का जो कैरेक्टर है, वो नैरेटर है. और आप सही कह रहे थे कि वो he looks at him like some sort of a charity case. Yeah. ऐसे लोग भी होते हैं, they look at charity cases like that and think that you are pushing them upwards. वैसा को it's not कि those people have some malice towards you. वैसा कुछ नहीं है, but those people are also expecting some sort of gratitude. ठीक है. So that's what the character is going for. So ये सब इंटरेस्टिंग कुछ कैरेक्टर ट्रोप्स है जो मूवीज में अक्सर नहीं दिखते. वेब सीरीज तो छोड़ो, मूवीज में भी अक्सर नहीं दिखते. ठीक है. और रही बात विक्रांत मासे का परफॉर्मेंस. ना, विक्रांत मासे हैज ऑलवेज बीन अ ट्रिमेंडस एक्टर. कोई भी वेब सीरीज उनको देख लो, ही इज ग्रेट. शो हो या मूवी हो, मूवी बकवास हो, कोई बात नहीं, ही इज ग्रेट. मुंबई कर एक बकवास मूवी था, ही वाज ग्रेट. ठीक है. सो it's never his fault with any of it. I think this is the first time a material was also given to him, which actually allowed him to flex his talents. Kyunki this movie entirely rests on his shoulders. He has to portray everything. He has to portray जो कैरेक्टर का जो नाइवेटे है, जो इनोसेंस है कैरेक्टर का, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, IAS IPS, ठीक है, IAS IPS नहीं हुआ, चलो UPSC कर लेते हैं. दैट शिफ्ट इमीडिएटली, दैट इनोसेंस कम्स फ्रॉम डेस्परेशन ना, क्योंकि लाइफ में आगे कुछ करना है. 12th फेल नहीं रहना है, लाइफ में आगे कुछ करना है. एंड इट्स नॉट कि ये जो सब डायलॉग्स मैं बोल रहा हूँ,
इट्स नॉट कि ये सब डायलॉग स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है टू बी इंस्पायरिंग टू द ऑडियंस, फोर्थ वॉल ब्रेक करके हाँ सुनो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना है, वैसा कुछ नहीं है लाइक मोस्ट वेब सीरीज में रहते हैं, वैसा कुछ नहीं है. डायलॉग्स ऑर्गेनिकली है स्क्रीन प्ले में. यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट. और एक अच्छा बात था कि विदु विनोद वीवीसी नेवर ट्राइड टू मेक इट लाइक यू नो like Danny Boyle did in Slumdog Millionaire. VVC never tried to make it poverty porn. वैसा कुछ नहीं है. ठीक है कि जब वो लाइक क्योंकि जो मनोज का जो कैरेक्टर है, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट, राइट? ही इज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, ही इज क्लीनिंग टॉयलेट्स, जो सब कुछ. कैमरा उस जो चीज पे है ना, उस चीज में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, उस मेलोड्रामा में ज्यादा नहीं जा रहा है. दिखा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, दिखा रहा है, शिफ्ट कर रहा है. इट्स अ मोन्टाज एंड इट्स एक्सपर्टली डन. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है उसमें. और रही बात वो जो रोमांस की, अब मेरे 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 हिसाब से वो रोमांस थोड़ा अंडर डेवलप था इनिशियली, ठीक है, लेकिन जो अच्छा था कि जो फीमेल कैरेक्टर है, उस फीमेल कैरेक्टर को ऐसा नहीं किया कि शी इज लाइक डिवोटेड टू मनोज या उसका कैरेक्टर इज ऑन द सर्विस ऑफ मनोज का कैरेक्टर, वैसा कुछ नहीं है. द कैरेक्टर हैज हर ओन लाइफ, द कैरेक्टर हैज हर ओन आर्क विच इज हैपनिंग ऑफ स्क्रीन. ठीक है ना? सो पैसेज ऑफ टाइम, तो अब पैसेज ऑफ टाइम हमें भी दिखाना पड़ेगा. सो द पैसेज ऑफ टाइम इज कि मनोज यहाँ पर चक्की पे काम कर रहा है, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. उधर ऑपोजिट में जो बाकी सब आए थे, वो लोग खुद अपनी लाइफ जी के प्रोग्रेस कर रहा है, रिग्रेस कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन टाइम प्रोग्रेशन हो रहा है. एंड इट्स नेवर शोन लाइक सो ऑब्ट्यूजली, यू नो, मतलब सो इतना जो ओपनली नहीं दिखा रहा है, सब हो रहा है. It's almost like VVC is capturing a snapshot, you know, of a time, of a place. So it like again it's the same thing ना कि मटेरियल सेम है, ठीक है. सेम मटेरियल से टीवीएफ एस्पिरेंट्स बनाता है जिसमें भर भर के अन अकेडमी का एडवर्टाइजमेंट भर के देता है. सेम, ठीक है. सेम मटेरियल से वीवीसी एक मूवी बनाता है जिसमें हर एक पॉइंट हिट करता है, यू नो. एक जगह है विकान मसे जब चक्की पे काम कर रहा है, उस जगह पे कैमरा वर्क देखना है एक सेकंड के लिए, ठीक है ना. वो लोकेशन देखो, लोकेशन कितना छोटा लोकेशन है, उस छोटे लोकेशन में ही कितना वो डायनामिक कैमरा वर्क यूज कर रहा है, जगह को कितना अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है. और रही बात जो डायलॉग्स है, एक डायलॉग था वो मनोज का उसके फादर से, यू नो, नेक्स्ट टाइम जब उसका फादर आता है उससे, यू नो, घर ले जाने के लिए, हिज फादर इज एग्जॉस्टेड, ही डजंट वांट टू फाइट एनीमोर. ऑनेस्ट फाइट नहीं लड़ सकते और ऑनेस्टी से नहीं चल सकता. एंड मनोज कहता है लेकिन हार भी तो नहीं सकते ना, यू नो. एंड दैट लाइन हिट्स यू बिकॉज दैट लाइन इज सेड विथ सच, यू नो, innocence and yet with such, you know, confidence कि it just impacts you. कभी कभी ये सब लाइन्स, यू नो, उतना ओवर द टॉप नहीं चाहिए, वैसे ही हो जाता है. वेरी ऑर्गेनिक ड्रामा. नहीं, इवन सच में एक और एक कमेंट आया है यहाँ पे कि वो 3 Idiots वाला comedic situation about jealousy when a friend does well is nice to express seriously in 12th fail. Yeah, that's the thing ना, क्योंकि also interesting ना कि ये 3 Idiots is made by Raju Hirani, 12th fail is made by Vidhu Vinod Chopra, both of them were partners while work partners and all that stuff, you know. So distinctive approaches to a similar material. Hirani's approach is mostly comedic, mostly commercial, family friendly. Chopra's approach is very realistic, at least as realistic as he can go, and this is very realistic for him. Yeah. और एक चीज जो भरद्वाज रंगन के एक इंटरव्यू में वीवीसी ने बोला, और मैंने मूवी देखने समय आई ऑल्सो नोटिस्ड, वो जो फीमेल कैरेक्टर जो है, आई एम सो सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, Shraddha, yeah, when she sings in that restaurant, you know, that is her voice.
Yeah, कोई it is. बैकग्राउंड क्यों, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, कोई श्रेया घोषाल का वॉइस नहीं है गा रहा है, वो सब नहीं है, दैट्स हर वॉइस। और ऑडियो को आइसोलेट किया गया है। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए, प्लीज Yeah. बोलिए। So what I was saying is there is an alternate version of the song in the हाँ, movie's official album, which is sung by Shreya Ghoshal, and that या is more of a studio song, but that's not used in the movie. दैट्स नॉट The यूज्ड इन द version मूवी। used in the या movie is sung by that actress, and it is without any music. उसको भी बहुत organic रखा है. Yeah. इट्स लाइक Raju Mudan, Oprah, more mature experience, learned in cinema. Yeah, if you look at 12th fail in that regard, that's exactly what it comes out, in that way. Or, I mean, I'm not going to talk about Raju Hirani here because this is not his movie we are discussing at all. So, Yes. and also with regards to 12th fail, you know, another thing about the camera work which I am not going to take credit for is observation के लिए मैं संजीत को थैंक्स बोलना चाहूंगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए। ही टोल्ड मी दिस कि कैमरा कैमरा कभी कभी शिफ्ट होता है, ठीक है, कभी कभी सब्जेक्टिव रहता है कैमरा, बट वो लास्ट सीन में जब वो इंटरव्यू के टाइम पे जब वो बैठा है उस रूम पे, तब कैमरा टॉप डाउन है, ठीक है, कैमरा टॉप डाउन है एंड ही इज लुकिंग एट द सर्कल ऑफ सो मेनी पीपल, like VVC is telling you have been following this guy, now look at the reality, people, there are so many people like this guy even in that final instance. It's like Yeah. he's telling you कि कंपटीशन ऐसा ही है, Yeah. you know After and इन्हीं में after so much that this character has gone through, he's just one of so many one of so aspirants many, for the post. Yeah. yeah, और वो and भी it's like इवन लाइक शुरुआत में इंटरवल के पहले भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है लाइक कि एक वो जब भी वो गली में आते हैं दिल्ली में एक फेमस गली है कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन एक गली रहती है जहाँ पे ऐसे कोचिंग क्लासेस है वहाँ Mukherjee Stop something नाम था ना. हाँ. राजेंद्र नगर में कोई तो है लाइक वो उसमें हम्म, मेंशन किया गया था एक फिल्म में मैंने फिल्म थोड़े टाइम पहले देखी थी लेकिन उतना पता है कि वो फिल्म में मेंशन किया था सो उसमें ऐसे पता चलता है वो हैरान हो जाता है और द कैमरा हाँ, जस्ट ऐसे रिवॉल्व्स अराउंड हिम कि क्या उसका रिएक्शन क्या है कि यार इतने सारे लोग को वो देख रहा है कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन हम्म, ये तो ख़ासियत है इस फ़िल्म की कि लोग पहले ऐसे सपने रखते हैं, तो सिर्फ़ अपने अपन खुद को इमेजिन करते हैं कि हाँ, मैं करेगा, वैसे करेगा। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं लोग और लोग को पता चलता है वैसे, तब जाके लोग को हिट होता है कि ओके मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ कितने सारे अनेक लोग हैं वैसे। और हम्म, तब जाके उनको एक रियलिटी चेक मिलती है और इस फ़िल्म ने वो ऐसे दिखाया था। मुझे नहीं पता कि वो जो एस्पिरेंट्स टीवीएफ एस्पिरेंट्स वो कितना कैसे ऐसे दिखा सकते हैं और दिखाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस फ़िल्म में टीवीएफ एस्पिरेंट्स का सीन ये है कि टीवीएफ एस्पिरेंट्स वांट टू केटर टू बोथ सेट्स ऑफ ऑडियंसेस। एक सेट जो प्रेप के लिए है जिसको मोटिवेशन चाहिए, और एक प्रेप जो एंटरटेनमेंट के लिए है जो टीवीएफ का ब्रांड देखने का चाहते हैं। सो उसके हिसाब से वो कॉमेडी है, वो रोमांस है, सब है। और एक साइड पे वो जो मोटिवेशन स्पीचेस है कि संदीप भैया आते हैं, एक स्पीच डालते हैं, सबको सब मोटिवेटेड हो जाते हैं, चलो काम पे लग जाते हैं, जो भी हो। Again, I am not, diminishing those web series or anything like that. Those have their set of audiences. I'm just saying, look at the difference. ठीक है ना? You guys continue for just 1 second. मैं एक हाँ, सेकंड सर। पे आता हूँ, दरवाजे पे ठीक कोई है, है। ठीक है। ओके, ओके। हाँ, सो मैं Yeah. एक्चुअली बोल रहा था कि अ, इतना इतना अच्छा लग रहा था तो जब भी देखने के लिए और इवन आप लोग ने अभी जब भी बात किया कि रोमांस के बारे में अभी जब भी आप बात किया कि डॉक्टर आपने भी कि लाइक इतना नेचुरल लग रहा था लाइक वो कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स नहीं थे। वो इवन स्पेशली मैं अभी जस्ट बात कर रहा हूँ मेधा शंकर के कैरेक्टर की श्रद्धा। सो वो एक कार्डबोर्ड कैरेक्टर नहीं थे, वो एकदम रियल Yeah. कि इट वाज़ हर मॉरल सपोर्ट कि जो उसको पुश कर रही थी कि आगे जाओ, आगे जाओ। Yeah, एक and टाइम पे there is this particular scene where हुँ, in the interval, just after interval, where he visits her house and he sees her room, or rather her cupboard, and it is filled with trophies and certificates which she has acquired since throughout her academic life, and
it shows that she's been a good student. She's been an academic student since childhood, something which he wasn't. And in a way, she's actually better than him academically, you know. And so she has her own life, her own existence, and Hmm. she's better than him. And Ye- yet she's eh, supporting him. And even in that phone call where he has professed his love to her, and उसके एंड पूरा इतना बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में था which has gotten cleared. All that has happened. All she says is, what are you doing here? You should go back and you should prepare for your exams. That's all she tells him there. So, in वो that one even scene कितना कुछ convey हो गया था, that where she's वो coming from. Okay. इवन वो And बुरा जैसे yeah, how, मानते what kind of हैं, person she is. Yeah. हाँ, इवन वो जब ये बुरा भी मानते हैं कि यार ये क्या है, ये सिर्फ ऐसे मतलब ये थोड़े टाइम तक रहेगी, और फिर जाके जब ये वो पांडे कैरेक्टर है वो सिर्फ बताते हैं कि ये थोड़े टाइम तक रहेगी और फिर निकल जाएगी। वो इतना बुरा मानते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसको पता है कि ओके, शी बिलीव्स कि ये करेगा, ये ज़रूर करेगा, और फिर जाके उसको वो Yeah. भरोसा दिलाते हैं, और फिर जाके वो बोलते हैं कि अभी करके दिखाओ। और वो जो आई थिंक जब ये फ़ोन कॉल पे रहते हैं, राइट? तो तभी वो बोलते हैं कि तुम बस हाँ बोल दो, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर लूँगा। मतलब वो एग्ज़ैक्ट डायलॉग नहीं Yeah. पता मुझे ऐसा, लेकिन Yeah. कुछ तो कर ही लूँगा वैसे। तो यहाँ पे ऐसा वो कुछ करते हैं, दैट्स लाइक द मेन इंस्पिरेशन बिहाइंड कि हाँ, ये Yeah. पीछे एटलीस्ट है। और मतलब एक चीज़ वो गौरी भैया के सेशन में भी, जैसे वो खुद भी बोलते हैं गौरी भैया कि लाइक वहाँ पे कि अ, मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन अगर तू बनेगा तो तेरे साथ ही साथ तेरा पूरा गाँव और हम लोग सब मतलब अपलिफ्ट हो गया। और ये सच बात है कि अगर वो बनेगा तो उसके साथ पूरा वो गाँव पूरा अपलिफ्ट होगा, उसकी पूरी कम्युनिटी अपलिफ्ट होगी, जो अब तक पॉसिबली या प्रोबेबली नहीं होता होगा वैसे। अभी Yeah. but उसके that's वो also वाले the personal voice, na? That's also the personal voice, because this was Chopra's passion project apparently. 4 साल से वो इसको लिख 4 साल से he has been with this project, you know. So मतलब समझ में आता है, there is a definite point he's trying to make here, and it's not कि it's not that much कि ये एक universal motivational movie है, वैसा नहीं है। It's a message movie, it's a great message movie. Yeah. All the people who are going to watch this movie and want to get home with a motivational moral thought or something in that movie, they will find it. All that is there. But there is also a point here कि Manoj's success is not his own success. वो खुद का success नहीं है. He also becomes a symbol for them in a way, Yeah. you know. And I am all मुझे अभी भी याद आता है कि वो लास्ट जो सीन है जब उसे पता चलता है, ही स्टैंडिंग इन द मिडल, ही स्टैंडिंग एंड शी टेल्स हिम दैट ही इज बीइंग सिलेक्टेड। वो पहले लेग क्रम्पल होता है, ठीक है, आंसू निकलते हैं, बैठता है, एंड ही कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन। लेकिन कैमरा इज स्टिल स्टेडी, कैमरा फुल उसका एक हॉरिजॉन्टल जो पोज है वहां पर ही है। कैमरा रोटेट नहीं कर रहा है उसके मुंह के चारों तरफ। कैमरा उसका इमोशन मास्क नहीं कर रहा है, वो सब कुछ नहीं है। कैमरा इज स्टिल। इट्स इंटरेस्टिंग कब चोपड़ा चूज करता है कैमरा को हैंडल करके मूव करो, कब चूज करता है कैमरा को स्टिल रखो, Yeah. and it works every time. That final scene is fantastically done. It is so good. और विक्रांत से मतलब क्या किया है बंदे ने, सीरियसली। Yeah. And also, the way this movie is directed, what makes this movie seem very much like classic cinema and not something else, not a piece of propaganda, or not one of those dramas who just trying to push its message, or just show it down your neck. वैसा नहीं लगता है. That is because this movie is basically capturing the story, the drama, and all this inspiration and all these other themes which this movie is trying to address. They just come along simultaneously. It is not like the movie has been made to send out a message, and it is stressing too much on that without building on the without actually establishing the drama, the characters, the plot. ऐसा नहीं है. The focus is always on the plot, the characters, the drama, and everything else just
flows along with that. I think जो आप choices mention कर रहे थे अमर्त्य, it is all with that thing in Hmm. mind, that particular perspective in mind, that it has to first be a drama, honest storytelling, and everything else to service that, probably. It has to be a story first and foremost. Yeah, All that stuff is there, but all that stuff is secondary. At the end of the day, it has to be a story. yeah, That's exactly. what it does very well. Yeah, Look what happens जब writers को time मिलते हैं, script लिखने में, सब कुछ करने में. Look what happens. This is what happens. We get जरूर. this. इवन yeah, लास्ट में वो जो मिलना था डीआईजी से, अ, उसका मिलना था वो, आई थिंक एक राउंड एक सर्कल बन जाता है पूरा, कि Hmm. ओके, लाइक ही हैज टू थैंक हिम, कि उसको धन्यवाद अदा करना ही था, कि Hmm. जिसके वजह से मैं बना हूँ ये चीज़, ये बना हूँ. और नॉट जस्ट कि बस ऐसी वो पढ़ाई मेहनत तो है ही, लेकिन वो जो सच्चाई है वो कायम रखने में भी, क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल देता वो अपने फाइनल इंटरव्यू में, लेकिन वो बस ऐसे ही रहा. एक बार उसको बाहर फेंक दिया था, लेकिन फिर भी उसको अंदर बुलाया, बोला कि अभी, और फिर जाके सिर्फ एक एक टफ प्रोफेसर जैसा था, इंटरव्यूअर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा फेस किया. जो भी था हिंदी में बात कर रहा था, लाइक इट्स जस्ट फॉर You व्हाट इट वाज, you know जैसे. also something which I liked. हुँ, Like हमें पता है कि क्या होगा, ठीक है, मतलब हम मूवी देख रहे हैं, वी ऑलरेडी नो द बीट्स ऑफ द मूवी, वी नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा मैक्स टू मैक्स. उसे उसे मिल जाएगा सब कुछ, या उसे नहीं मिलेगा, जो भी हो, कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ एक इनएविटेबल कथारसिस होगा. व्हाट आई लाइक्ड इज, वो इंटरव्यू के रूम के उसके बाद जब वो निकला रूम से, उस रूम पे क्या हुआ, यूजुअली क्या होता है मूवीज में, एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक दिखा देगा उस सीन का, और वो सीन कंटिन्यूअस चलता रहेगा कि क्या हो रहा है. इस मूवी में वैसा नहीं है. जब श्रद्धा रिजल्ट्स देख रही है, यू नो द स्क्रीन हुँ, प्ले नोज दैट द ऑडियंस इज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ, इसलिए दैट सीन इज कटिंग बैक टू दैट सीन जब वो इंटरव्यू के रूम पे अंदर, और वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, and it is again cutting back to Manoj's face, again cutting back to Shraddha's face. It's like cross cutting continuously, and it works. Again, choices, directorial choices, material जो भी हो, director का vision भी जरूरत है. yeah. अच्छा. बट अमर्त्य डॉक्टर ने मुझे मेंशन किया था एक बार, एक लाइक हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे कि ही हैज मेट द रियल लाइफ मनोज मनोज मनोज, तिवारी. हाँ, ओके. सो डॉक्टर, आप बताइए ऑन कैमरा कि क्या एक्सपीरियंस रहा था, कैसे मिले थे आप, और आपने तो फिल्म रिलीज होने से पहले आपने थे, लाइक क्या क्या था. So this was around 2019. I Hmm. was in a this thing medical seminar, and someone had just called an IPS person out of the blue, and I was like curious, like "ये क्या है?" And they just called him, and because they knew him, and he was called, and he was speaking about his life experience, and people had told about him that he came from a very he came from a very meager background, very humble background in from Chambal area, and he was doing, while he was cracking his UPSC, he had taken up a lot of odd jobs, worked in a mill, in a chakki mill, and done a lot of other kind of odd jobs like drive tempos, and उसके साथ प्रिपेयर भी कर रहे थे. And his main motivation, the main his what do you say, pillar of strength was his wife and then girlfriend, who was after him to do it, and his big inspiration. And एक particular line जो उन्होंने उस वक्त कहा था, which they have actually used liberally in the movie, is that बाहर कितना भी अंधेरा हो, मन का अंधेरा, मन के का अंदर का अंधेरा नहीं पड़ना चाहिए. That's exactly the phrase he had used back then, and which is also there in the movie. And so वो सब था, and उसके बाद वो बने, and I just heard him speak. Yeah, uh, he had this optimism to him. He had this inspiring this thing, very inspiring persona while he was speaking. And
उस वक्त तो इतना कुछ मालूम नहीं था कि उनके ऊपर कभी एक फिल्म देखने को मिलेगा और समथिंग लाइक दैट। बट या आई जस्ट हर्ड हिम स्पीक एंड आई मेट हिम, थोड़ा उनसे बातचीत हुई थी, तो जस्ट उतना ही मुझे याद। एंड या ही वाज एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, एंड इट्स गुड दैट उनपे एक फिल्म बनी है एंड व्हिच इज सो गुड एंड व्हिच very faithfully captures his journey, although the movie says it is not exclusively his biographical drama or biopic as we call him. It is also based on a lot of other experience of people who have taken up public services exams, as what Vidhu Vinod Chopra has said. So yeah, I mean, everything that happens in the movie, we cannot take it as his own life experience. बट So, yeah, डॉक्टर whatever उसमें the case may be, it's nice to उसमें have met a person who हम्म, inspired this movie. Yeah, बट उसमें वो पोस्टर में लिखते भी है कि इट इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय मिलियन स्टोरीज एज वेल, कि yeah, इतने it is. सारे Yeah, स्टोरीज है और उस ऊपर से फिर जाके ये नॉट जस्ट ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टर है मनोज, उसको थोड़ा फिक्शनलाइज तो किया है, लेकिन इतना फिक्शनलाइज नहीं किया क्योंकि कि मतलब वो एक आईएएस बनने वाले इंसान को ऐसे रिलेटेबल ही ना लगे, वैसा कुछ नहीं किया है वैसे। तो yeah, इतनी इतनी I see it. Yeah. रिलेटेबल जैसे लाइक की थी स्टोरी, इसलिए तो सो लाइक ये पिक्सल बाबा विच इज संजीत का एक क्वेश्चन रहा है आप लोग के लिए कि प्लीज डू टेल इफ यू थिंक दिस इज द बेस्ट बीवीसी फिल्म। पर्सनली I लव love काजल। Khamosh. I love Khamosh. Parinda I have to rewatch, but I genuinely think this is his best work till now. अच्छा डॉक्टर। Yeah, so Khamosh and Parinda, yeah, they are among his top movies. See, the thing is, Abhi, this movie has just come out right now. I Yeah, yeah. and Parinda and Khamosh have been there for years now. Hmm. What I generally do is, yeah, there is this thing of recency bias होता है फिल्मों Hmm. को Hmm. जज करने के time. So Hmm. what I generally refrain from doing is I do not generally compare a movie which has just come out in less than a year with a movie which has been around for years. So for now, I'll still put this behind both Khamosh and Parinda. For me, Parinda is actually my favorite Vidhu Vinod Chopra directed movie, followed by Khamosh. I've not watched Sazae Mauth. And so I'll put Parinda and Khamosh before this, and I'll keep 12th Fail as third for now. But let's see how this movie ages. Let's see how this ranking is after, say, 5 6 years from now when this movie is 5 6 years old. Yeah, और I एक क्वेश्चन। personally think I personally think कि ये this movie will actually age quite well. I mean, yeah, मेरा personal opinion, this movie is going to age quite well. एक और yeah. एक क्वेश्चन है अबाउट वीवीसीज फिल्मोग्राफी। आप लाइक आई थिंक डॉक्टर को ये चीज ज्यादा पता की होगी। स्वप्निल आजाद का कमेंट है कि व्हाट वाज द दैट वीवीसी फिल्म दैट नेवर गॉट अ रिलीज ईयर। कुछ आइडिया Religious. डॉक्टर? I Wasn't that think it would be Sazae Mauth. I'm not sure. So Sazae Mauth, I did don't his think. Hollywood did his Okay, Hollywood Broken movie ever Horses. get released? Broken. Yeah, he had made a remake of Parinda of sorts in Hollywood called Broken Horses. So Did that could be the movie. I don't know if it released here in India, but it was a huh, remake of Parinda in hmm, Hollywood. Yeah, Broken hmm, Horses. अच्छा, hmm, यहाँ पे रिलीज नहीं हुई थी वो। hmm. Or I'm not Sazae sure. Moth, I don't. Sazae Moth, did it ever get wide release? I don't think so. Yeah. Anyway, Joe, what he Vidhu Vinod Chopra made after Parinda, at least for me, okay, we're talking about 12th fail. We don't want to get in there, but yeah, it has ऐसा लग रहा अच्छा था कि थोड़ा ड्रॉप हुआ है उनका क्वालिटी along the time as a hmm, director. Although I did like Eklavya the Royal Guard for some reasons, but okay, that's not something which you can very uh, like confidently call a very good, well-made movie. It has its share of flaws, but yeah, Vidhu Vinod Chopra was had somewhere not lost track ऐसे लग रहा था. With this movie, ऐसे लग रहा है he's come back to his own and he's come back to being this really filmmaker that we can all look up to and look forward to what he's going to hmm. make next. Yeah, more importantly look forward to like एक yeah, नया जनरेशन, एक नया मोड ऑफ फिल्म मेकिंग, इतने सारे नए नए वॉइसेस आ रहे हैं वर्ल्ड सिनेमा में, जो भी हो उस स्टेज में ऐसा फिल्म निकालना
which can Yeah. easily stand tall among all the other movies being made around the world at this point, you know. Yeah. Also, That's there is one observation जो भरद्वाज रंगन का है, मेरा खुद का नहीं है. I won't take any credit for it. He observed it and I just read it, and but I would like to highlight it since it is a really good observation. और ये है कि this movie comes across as a movie from a very secure filmmaker. Like he is confident about his drama. He knows it will work. The way he's used music, and even hmm, that song, all the songs they play and all the music they all play after the scene has already unfolded. They don't interject into the scene to drive the point, make the point more bold. The drama is all, already going to make the point, emphasize on whatever the maker intends to do. also can If I it, also can I yes, interject? yeah, yeah, Can I yes, yes, interject? yes, 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 sorry, yeah. One thing before I forget, you know, sound design of this movie. Amazing sound design of this movie. It is so good. मतलब इमर्शन कुछ अलग ही लेवल का इमर्शन था इस मूवी में साउंड डिजाइन की वजह से. कभी कभी जो साउंड साउंड कभी कभी जो मतलब साइलेंट हो जाता है, कभी कभी जो डाइजेटिक साउंड मतलब यू नो एनवायरनमेंट का साउंड यूज कर रहा है, कोई आउटसाइड कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं डाल रहा है कभी कभी. मतलब जो चॉइसेस कर रहा है वो साउंड डिजाइनिंग में फैंटेस्टिक डन, फैंटेस्टिक वर्क साउंड डिजाइन का. Yeah. Hmm. That's good. That's good to hear. Yeah, So, lot of classical filmmaking, like या या yeah, which is more invested in just telling the story and everything to service that. Yeah. that's good. थैंक यू सो मच फाइनली गाइज ये शो में इस डिस्कशन में आने के लिए. आई नो अमर्त्य रेयरली ऐसे इतनी तारीफ करता है हिंदी फिल्म्स की. डॉक्टर तो ऑब्वियसली करता है कि लाइक इट्स हिज हार्ट, इट्स वेयर हिज हार्ट लाइज वैसे हिंदी सिनेमा वैसे. सो वो तो करता ही है, बट इट्स रेयर टू फाइंड दिस काइंड ऑफ लव मतलब हिंदी सिनेमा से अमर्त्य में. सो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस डिस्कशन में आने के लिए. मज़ा आया इस फ़िल्म के बारे में इतने हफ्तों से बात कर रहा था, बट ये डिस्कशन डिले होते जा रहा था. मेरे ही वजह से होते जा रहा था, जस्ट लाइक पर्सनल रीज़न्स की वजह से. लेकिन अभी जब भी कर रहे हैं, लाइक इतना दिल को संतुष्टि हो रही है कि like hoping that it gets an OTT release very soon, और फिर जाके इस OTT के वजह से और भी लोगों को um, देख सके ये फिल्म, और एस्पिरेंट्स वाले जो लाइक वो चैनल पे आ जाए, Audience. लाइक ऑडियंस को लाइक वो पता चल जाए, क्योंकि एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली एज अ वेब सीरीज लोग कंज्यूम करते हैं ऑन वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो तभी उस प्रमाण में कंज्यूम करेंगे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कैसे लाइक वो जो ऑडियंस है जिसने थिएटर में नहीं देखी, वो कैसे रिएक्ट करेगी इस फिल्म के बारे में. So yes, let's see. Till then, thank you so much, guys. इस discussion में आने के लिए. We'll meet in some other discussion very soon. Thank you, Sanket, for organizing it and calling us. Yeah. या